did mention that actually this is after the college hours, but then I will send you the letter, not an issue. Yeah. I did make a mention of that. We'll start in 10 minutes if there is time. Yeah, sure. We're actually so used to that Google Meet that coming to a different platform, it takes a few minutes for you to adjust. Yeah, it takes. Actually, Zoom is quite friendly. Both Google and Zoom both are friendly. Webex and all those others are not at all very comfortable. That's true. Each college has its own platform, so when they send some links, at times it becomes very difficult for me. So I tell them, let us first rehearse out so that in case I am to upload anything, I don't have to keep on asking from where to upload, where to mount, and something of that sort that comes into picture. Now here the students are on the YouTube. On the YouTube, and the some teachers will be there may come on the say this particular Zoom thing. Okay. Zoom. There were a good number of teachers, say students on the YouTube. Okay. Yes, they must be joining. It will take some time for them to join. About how many of them are there, sir, on the YouTube? Currently, that's what I am trying to see. They will join. They're still to join. Yeah. Yeah. They're joining. We need to wait some time. So when did you reach home today? You started early. Do you stay close to your workplace? No, it's about a 40 minutes journey. I stay in Vasai and the college is in Borivali. Okay. That's why I took a half day. But your stay is not in Borivali. Somewhere else. No. I have to come back to Vasai. Okay. Yeah. It's another Western line. Western line itself, yes. The travel is not that big a problem. It's only that there's a little time there. That's true. In Pune, though it's hardly 10 kilometers, we still need 40 minutes. We have a very bad, still worse rather. Very, very bad traffic system. Oh. Miserable rather. My better half always says that Pune is a better city to live in. He's been there. No, city is wonderful. There's one thing. City is far better than Mumbai to live. Yeah. Travel is bad, and because everyone has a vehicle. Our vehicles are two-wheelers. So if somebody is traveling with a car, then he should keep a big ice on his head and drive very coolly. We drive by two-wheelers, so we escape very fast. Yeah. 90% of Puneites have two-wheelers. And they don't I think you have a very good road connectivity also that way. We have a good road connectivity, but we don't have a good traffic system. Yeah. That is the real problem with us. So otherwise, Pune is called as the happiest city in India. It's a good place. I've come quite often. I like the place for sure. Yeah, it's a very nice place. Secondly, in whichever area you are working, you can get friends accordingly. So if you have, if you are interested in arts, there are people who will be in arts. If you are interested in music, there are groups who are working, people who are working in environment, people who are working for treks, people who are working. They're on their own. After the work is over, they go into libraries, they go into theaters. They work a good lot. Works it's a good congenial network to have. Actually, they work for their passion. After a very large number of groups, teams
People from Pune love to roam. People are very foodie in Pune. Some of the finest restaurants are available in Pune. You I can get remember this one, this Blue Nile or Vaishnavi. something. Okay, Blue Nile. Yeah. Blue Yeah. Nile is in camp area. Yeah. But then you have Vaishali and Rupali, and those are very, very famous. Even all the political leaders who come to Pune, they will go there. Oh, It's okay. I'll keep that in mind, maybe on my next visit. yeah, Vaishali is on Ferguson College Road. It's exactly opposite Ferguson. It's a Okay. very, very big brand. You go early in the morning at 7, you are in the queue. You go at Oh, 11, at 11 o'clock, you're still in the queue. You still have to wait for some time over there. okay. That's a shocker. And there are very, very large number of restaurants, good restaurants. Mm-hmm. In Puneites, either they go out of the city or they go for food on Saturdays and Sundays. They roam a lot. I think Because, Mumbaikars, on the other hand, they meet so much of people in the local train. By the weekend, they don't want to see anyone. yeah, nobody, they don't want to see anyone. That's very, very true. Mm. But this is not the case with Pune. Pune is it's a very it's cultural capital of the city of the state. Mm-hmm. It is a center of a lot of educational institutions. It Yes, is a that I IT agree. hub. Hmm. It's a IT hub. It has multiple universities. It has a very large number of industries around it. I think during the And pandemic, a lot more of the IT people have actually moved there. yeah, very true. And very well connected with the world. Mm. It's quite well connected with the world. A very large number of IT professionals are staying in Pune. I actually spent Rather, quite a lot of time in Gujarat, in Vadodara. So when I get to Pune, I sometimes have a feeling that there's parallels between these two. yeah, Vadodara also has a very large number of Marathi people. Yeah, Yeah, because the Gaikwads were from Maharashtra. No? yes, yes. I've So, actually, I spent most of my life in Vadodara. okay, but how is it that your name suggests you are from Kerala and you are in there? Born in Kerala, brought up in Gujarat, and married into Bombay. That's how my case Oh, is. okay, okay. It's a different progression then. Yeah, it's a different progression. So we were a little laid back the way I was brought up and all that, but Bombay has a way of coloring you up in its own color. So Mhm. When I heard this name first, Panakkal, surname, so I put it on a search. I said I have yeah, heard this name somewhere. So it was there in the history. okay, The Panakkals were the financiers of the king, yeah, and later on they were with the Britishers. That is what the history. We had it in our books. So mm-hmm. they were the Sardars of the then king, I think so, Zamorin or something like this. Yes, yes, That is what the history suggests out. mm-hmm. And in the later phases, they were with the Britishers, and Yes, they and the were the majority, financiers. Hmm. yes, majority of the Panikal, that family clan is into business, trading, and that kind of major financial aspects to them. Okay. So that's why when Those, you come from arts, they do feel a little bewildered about it. because no, I said I have heard this name. It was it was in the history book, Mm-hmm. and it was about Kerala. There was one or two sentences. So I just tried to search it out. Okay. It was the same thing that came in. Someone has joined now. Some Yeah. people are joining. Maybe it may be five. We have to wait for 5 more minutes or so. Yeah, It not a is, problem. yeah.
Now, how long are you here in this particular institute, Mumbai? I joined them in 2011. Okay, So basically my second job after I came to Mumbai. okay, So been there with them for a long time now. okay, okay. Yeah, it's a lot of time. Yeah, I kind of like the work culture here. I like there's a certain ethics to it. There's a certain onus on, they focus a lot on the way you nurture the value system in students. That's something I really believe in. That keeps me really connected And with the college. I have a general feeling, I keep on looking at so many institutions. No? I find the value system and the primarily the work schedules, Hmm. they are very precise in the Christian minority institutions. Yes. In all those, I mean, in most, I don't say in all, but in Hmm. most, you can, guess, I'm going to that institution. It possibly means 1, 2, 3, 4, 5 things are there. Yeah. Very rarely you don't find it out, but otherwise, normally you find discipline, Hmm. a good discipline, a clean campus. That is always to be seen. This is what my experience is. Yes, sir. Second part is that there is a good work allocation. So whenever I go to institutions, and if it's a Christian minority institution, then in that case there is somebody who's going to be connected, who's going to keep a connect, who's going to check whether you have come, whether you have reached, where are you, Yeah. something of this sort that I'm able to see. And the work is quite decent. They put the work, it normally relates to NAC. The work is fairly put in a proper way. Documentation is fairly good. That's what my experiences are. Mm-hmm. This They is have a not. habit of charting out details and making sure there's a one-point contact for everything. Yeah, that's what I'm saying. But then there are quite a few many institutions of some particular communities. If with them you can never expect things. They will first go and how can we manipulate? That is the way Yeah. it starts like. And things become very difficult to explain them that we are not here to manipulate things or something like this. So, I know. and then normally the further discussion ends itself over there. Then you normally don't go to that institute again because it does not match up. Vinodji, Yeah. you have given a hand raise. Please, you can talk out. Vinod sir, there's a hand raise from you. You wish to talk? Not able to hear it. Okay, maybe by mistake. Okay. चला व्हाईट कोड सुरू करायचं का? सर जॉईन होत आहेत अजून, हम्म. कारण इकडे अजून 18च आहेत आणि इकडेही झूमला अजून 15 जण झालेले आहेत. मग कसं करायचं? अजून एक 2-3 मिनिटं थांबूया आपण. चालेल. And we will start in 3 minutes or so. येस. A good number of students from Karsekar College have joined. Okay. Good. Fine. Okay. Here we have around 30 participants. They have come from perhaps from the same link, so that the same name is to be seen over here. घनश्याम ती आपलं घनश्याम म्हणतो. येस सर. असं काम तिला सांगितलेलं होतं तिने केलंय का रे? काही तुला माहितीये का? कशाचं सर? नेहाला काही कामं सांगितलेली होती आज, ती झालीत का? विचारतो मी विचारून तुम्हाला कॉल करायला सांगतो. तिला मेसेज टाकायला सांगतो. वेटिंग फॉर दॅट. हो हो.
So shall we start? I think so. We should start. Yes, sir, we can start now. Yeah, fine. Let me introduce you to Dr. Deepa Panakkal, madam. Dear students, respected teachers from these three colleges, and my dear student friends. This is actually our second day. Yesterday we could not hold the session. We have conveyed it to your college that this date, one day will be taken care. The extra day will be declared very soon by tomorrow. And the session will be completing out. Today we have with us Dr. Deepa Panakkal, madam.
who is from Saint. Just 1 minute. We have Dr. Deepa Panakkal Madam, who is currently working in St. Francis College of Engineering, Mumbai, and Technology, I mean to say. She is a TED Talk speaker. She has an excellent communication skills. She has received awards for training her training capabilities at both national and international levels, and is associated with and is recognized by the AICTE. She is a trainer for universal human values, and she has been serving as a judge at FRCE annual national level debates since 2016. She is actively involved in training sessions for the students. Her TED Talk was really wonderful, and I had a chance to work with her recently during the NAC preparation and the NAC work that was going on at St. Francis College. What I could sense out was she was extremely sincere in her work and very much well organized. After knowing about her, I also heard her TED Talk, and I thought that perhaps she is the right person on this platform, and therefore I have invited her for this particular course. She and I will be conducting this 1-week course. She will be conducting these sessions today, tomorrow, and day after tomorrow. Without being here for much time, I hand over the mic or the speaker to Dr. Deepa. Thank you so much. Thank you, sir. It's very humbling when it comes from you. And thank you so much for the opportunity. Good evening, everyone. I think sir has introduced me more than, I would say a little exaggerated is what I felt, but all right. So yes, I've been in this teaching of communication skills and a bit of counseling here and there for my students for more than a decade now, 15 years to be precise. And I would love to interact with you all and share what I know, a few things about skill sets that we do need in today's world. Okay. So sir has very nicely started with the basics of study skills and taken you into thinking capabilities as well. I will be taking you ahead with reading skills, listening, and a bit of note taking. And I would also like to bring in a bit of stress management, because I believe when we talk about today's world, everything in whatever we do, be it as a student or as a teacher, both require that aspect. All right. So without further ado, today we will be focusing on the reading skills. All right, let me start sharing my screen so I can take it from there with you all. Okay, just give me a moment. Okay, so let's begin by letting you know what is going to be the flow of discussion. So you should know what you need to expect from this session. So let me begin with that. First of all, let's understand why read. That why is it that Deepa ma'am gets to talk to us for the first time and she's going to talk about reading skills. So we'll definitely go there. That why are we discussing reading skills? Okay, इनका क्या इतना important है कि उनको इतना value दिया जा रहा है? Then we'll discuss reading as a skill. All right. Now, क्यों वो उस हिसाब से discuss करना जरूरी है? I will emphasize on that when I get there. All right. What usually goes wrong? Now, this is very important. Before we even start discussing how to make things better, it's very important that we realize where are we going wrong. कौन सी चीज है जहाँ पे सुधार करना जरूरी है. एक बार वो क्लियर हो जाए तो फिर आप उस पे आराम से डेवलप कर सकते हैं, right? So based on that, we'll be discussing certain tips and tricks
Only then I go to the little theoretical aspects and the strategies. All right? कि और क्या उसमें addition कर सकते हैं, and then I'll sum up the session. So this is how I plan to divide the time that we have together. All right? So let's begin by why read? All right? That's a very important question. Why read? Now, usually when I ask my students, why should you read? So they said, ma'am, pass hona hai to padhna padta hai, right? Or the common answers that you get is, knowledge ke liye acha hai, because when you read new stuff, you are gathering knowledge, right? Vocabulary ke liye, but sirf itna hai kya? Or there is more to it? Well, there is more to it. Let's take the cliched ones and then the a little more forwarded stuff as well. Reading, it is established in research that it improves your grasping power and understanding. Okay? हमें content मिलने पे हमारा content को सिर्फ memorize करना ये एक बात है, क्योंकि हमें टीचर ने बोला ये important है तो ये पढ़ लिया और जो सवाल आया उस पे exactly वही लिख देना, that is one thing. Having understood that and being able to connect it, अगली बार when you're reading something or when you come across certain data, any content for that matter, जो इससे कहीं भी थोड़ा सा related है, the understanding level, right? It's not just about memorizing data, but the understanding, connecting it to your previous knowledge, जो help करेगा आपको आगे आपका knowledge, adds to information and knowledge, this part, it will help to add on to that as well, right? So reading is known to have done that. Exactly the reason why it's very important that we learn this skill really well, right? Obviously, it develops vocabulary. Every time you turn a page, every time you go to a content, you do come across words which are familiar, but at the same time, you do come across words which you're not familiar with. And the beauty of it is, as many times you come across it, it becomes a part of your vocabulary. It doesn't remain an unfamiliar word anymore. तो अगली बार जब आप बात कर रहे हैं या कहीं पे किसी के साथ interact कर रहे हैं, probability of you having more words than what you had previously would increase. So vocabulary building के लिए भी reading is known to have helped. Now, when you put all this together, which is that one aspect, of knowledge taking that really gets worked up? Fluency, right? कई बार हम कहते हैं कि English पे हमारा command ठीक से बैठ नहीं रहा है, या कई बार students कहते हैं, ma'am, when I speak, no, the word that I want, exact word सही time पे ही याद नहीं आता है. Okay? If you are into reading, then you always have an alternative to a certain expression in your mind, right? So exact word ना मिले तो भी stage पे तुरंत improvise करके अगला आप उसको किस तरह express कर सकते हैं, अपनी बात को एक नए तरीके से कैसे ढाल सकते हैं. This becomes possible if you have been reading, right? So it definitely empowers you with fluency. बोलते वक्त आराम से flow में communicate कर पाना, बराबर है? It gives you a broader perspective. Now, ideally, अगर आपको एक बात के बारे में सिर्फ एक जगह से पता चले, हम सबका नजरिया बहुत अलग अलग होता है, right? You'll all agree on that, बराबर है? हम सबका नजरिया बहुत सी बातों को लेकर काफी अलग रहता है. It is very enriching when you get a broader perspective. Even if you look at the way history gets written, right? Sir was just talking to me about it, and it clicked that different way, the very same time of history, the way it is written in different history books might be different. When you put this together, what happens? You get a larger picture, right? When you have a larger picture, when you communicate about things, you tend to be more objective. यानी हमारा एक चीज के ऊपर नजरिया एकदम stubborn हो जाना कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, वैसा नहीं. हाँ, इसकी और भी possibilities है. Analytical ability, clarity of thought का develop होना, ये भी reading का एक benefit है, right? Question. We live in a world where questioning has become very important. Anything that has come to you, if you take it just as it is, now we have a problem there, right? People's rights get manipulated, people's thoughts and words get manipulated. It's very important that you learn to question. The more content you read, the more perspectives you gather, that much more inquisitive you become. Inquisitive as in, आप उतना ज़्यादा चीज़ों को question करते हैं. Questioning to gather more knowledge, more clarity of thought, right? When this kind of nature is developed, what is a skill that we are discussing that reading is developing in turn? Comprehension. Now, the minute I say comprehension, हम में से कुछ लोगों को स्कूल का comprehension याद आया होगा. That एक passage दे दिया,
and then few questions दे दिए, you first read the question, then you go back to the passage. हाँ, ये same word है, चलो copy paste. Okay. For getting marks, yes, we all did that. All of us are guilty of it one time or the other. Huh? But the real comprehension is what? When I get a content, I don't just read what is given. I understand what kind of serious issue is it raising. Why does this content want, what does this content expect from me after reading this as a human being, as a thinking, evolved individual? What is the kind of perspective I'm supposed to develop, right? हमारी knowledge का एक पढ़ाव बढ़ना आपकी comprehension पे बहुत depend करता है. आपको मिले हुए डेटा को आप analyze कैसे करते हैं, right? How are you programmed? The word conditioning, right? Do you fit the box every time believing what everyone says? Or do you try to open it a bit and see what else is the possibility, right? So venturing out into more things, that is what reading does for you, okay? So reading is important, no doubts about that. Nurturing not just your vocabulary, सिर्फ भाषा सीखने के लिए नहीं, but आपकी सोच, आपकी चीजों की तरफ का नजरिया, overall आपका confidence and आपका expression बढ़ाने में भी वो चीज मदद करती है. So yes, it is a skill. Why? I'm moving on to part 2 now. Why is it that reading as a skill has to be seen? कई बार when I talk to students, I have a feeling they're looking at reading as more as a task. काम है ना? Like when ma'am says read something, ma'am, this is the first expression that comes. So it seems like a task, right? So today during the session, we're going to make sure we discuss it as a skill, not as a task, right? इसके फायदे समझ के, इसका तरीका और सलीका समझ के, we will do it in a manner where it doesn't become a task. It's a skill. So let's talk about it that way, right? कोई भी भाषा जब आप सीखते हैं, okay? So LSRW becomes very important. Now what is that? Listening, speaking, reading, writing, and in that order, okay? Think of the language that you're most fluent in. Why is it that you're so fluent in it? Probably you have been listening to it more, right? ये एक चीज है जो बहुत important है. हम जितना ज्यादा एक भाषा की तरफ exposure पाते हैं, उतना ज्यादा हमारा उस भाषा पे command. It's a sheer logic of it, right? Listening and speaking is the first thing that comes innately to a human being. हमारे लिए कोई भाषा को सुनना और उसका मतलब जाने बिना भी words को repeat करना बड़ा आसान होता है. Somewhere doing that, we do end up learning the language because as we grow, उसका meaning वगैरह उसमें बैठने लगता है, right? इसी तरह से reading and writing भी work करते हैं, okay? जितना ज्यादा आप content read करते हैं या एक भाषा में एक कंटेंट की तरफ आपका एक्सपोजर ज्यादा, उतना आपका उसमें कमांड ज्यादा, right? Now if you look at this, what I'm showing you right here, when you're using language or a way of expression for that matter, two levels are there, receptive and productive. Receptive is how I gather content. Productive is how I express it, right? Now imagine there is a vessel, ठीक है? एक कुछ भी vessel आप imagine कीजिए, एक बर्तन या एक glass imagine कीजिए. अगर उसमें से कुछ निकलना है बाहर, उसके अंदर कुछ होना जरूरी है ना? Something has to be there na for something to come out, right? For us to actually do something, a certain potential of ours is what we use, बराबर? So now if you look at this chart that I'm showing you, productive में speaking and writing जाता है. Okay, what I produce, what I come out with is in the form of written expression or in the way I speak. What gives me the raw material for it, what lays the foundation for it is what I listen and what I read, right? Imagine I put you in a group discussion, or I put you in an interview. How will you express yourself? If it's a written test, you will write. A question is asked, you will respond by speaking. बट वो राइटिंग के लिए एंड वो स्पीच के लिए जो आपका कंटेंट आ रहा है, जिसके बेसिस पे आप कॉन्फिडेंटली ये दो चीजें कर पाएंगे, दैट्स कमिंग फ्रॉम लिसनिंग एंड रीडिंग, राइट? इट इज अ स्किल. इट एम्पावर्स यू एट बोथ द लेवल ऑफ स्पीच एंड राइटिंग. आपका स्पीच एंड आपका राइटिंग दोनों इंप्रूव होता है अगर आपके लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स का ख्याल रखा जाए तो. ठीक है, आज तो फिलहाल हम लोग रीडिंग पे ध्यान देंगे, कल हम लोग लिसनिंग पे जरूर जाएंगे. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं.
इन स्किल्स की एक खासियत है, ऑलराइट, सिंस दे वर्क टुगेदर, it's always good to make them work together when you learn them, all right? So reading also, it's better if it is not learned in isolation. You take a book and what are you doing? जबरदस्ती ऐसे बैठ के उसको कैसे भी आज खत्म करना है ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ रहे, right? अभी ये एक तरीका है where even if you feel थोड़ा थोड़ा अभी ध्यान हट रहा है, concentration नहीं आ रहा है, तो भी नहीं लगे रहते हैं. If you do it that way, it is a task. It is difficult, right? But now imagine this. What if I combine it with some other skills? आपकी जनरेशन में, all my students here, आप लोगों को ऑडियो बुक्स का तो पता है, आप सोशल मीडिया में सबसे एक्टिव वाले जनरेशन है, राइट? तो व्हाट्सएप पे आप लोग एक दूसरे को वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, आपको ऑडियो बुक्स फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारे, गूगल पे जाके बस, या तो फिर एलेक्सा को बोल दो, एलेक्सा गिव मी ऑडियो बुक्स, एंड भर के आ गए, राइट? नाउ इमेजिन दिस, the same content that you are finding difficult to read, अगर आप उसको सुनते हुए रीड कर रहे हैं, alright, automatically the amount of content you retain and the amount of time you spend reading, it is shown that it has increased, बढ़ता है. ठीक है, चलो ये नहीं, कुछ और करते हैं, उसको रीडिंग को मुझे अगर लिसनिंग के साथ नहीं कंबाइन करना है, राइटिंग की बात करते हैं. आई एम रीडिंग समथिंग एंड एट द सेम टाइम आई एम मेकिंग माई नोट्स. साइड बाय साइड कुछ तो हरकत चालू है, पूरा भर के नहीं लिखेंगे, हाँ, नोट टेकिंग भी हम लोग कल बात करेंगे कैसे करना है, बट आप प्रॉपर नोट्स जब लेते हैं, देयर इज अ फॉर्मेट, अ फ्लो चार्ट दैट यू क्रिएटिंग. आपका कंटेंट, उसको समझने का तरीका, उस कंटेंट में डिफरेंट चीजों के बीच का कनेक्शन, सब बिठाते हुए हम आगे चल रहे हैं. यानी बुक बंद होने के बाद भी पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे रेडी है, राइट? The content is remembered better, understood better, it's comprehended better, right? So reading as a skill, it always works. In itself, it is great, no doubt. But if you combine it with other skills, usually ज़्यादातर listening के साथ and writing के साथ. ध्यान रहे, मैंने speaking यहाँ पे include नहीं किया है. क्यों? आपको आगे पता चलेगा, right? अगर आप writing के साथ या listening के साथ reading को combine करते हैं, it is shown to be more effective. ज्यादा आपको उसका फायदा होता है, ठीक है? ओके, नाउ हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, नाउ आई वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू. ऑलराइट, व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आई वांट यू गाइस टू टेल मी नाउ व्हाट मेक्स रीडिंग डिफिकल्ट. ठीक है, ज्यादातर बिफोर आई गो एंड स्टार्ट टेलिंग यू अरे रीडिंग के साथ क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं, आप मुझे बताइए पहले. ओके, सो लेट्स हियर फ्रॉम यू. ऑल यू हैव टू डू इज menti.com पे जाइए, वहां पे एक बार आपको एक कोड पूछेगा 9150853, पुट दिस कोड देयर, ऑलराइट? देन वहां पे एक पोल जैसा आएगा, आपको सिर्फ वर्ड्स पूछेंगे, व्हाट मेक्स रीडिंग डिफिकल्ट, उन लोग भी वही पूछ रहे हैं, आप वन वर्ड वर्ड डालते जाइए, ठीक है? वॉट एवर यू फील मेक्स रीडिंग डिफिकल्ट, ठीक है? पुट इन द वर्ड, देन आई विल गो टू दैट menti.com एंड आई शो यू कि ज्यादातर सबका आंसर्स क्या आया है. ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको एनीवे बता दूंगी, बट देन जस्ट वट एवर यूर फीलिंग अबाउट दिस, एक्सप्रेस योर सेल्फ. लेट्स डू सम राइटिंग, ओके, ऑन योर हैंडहेल्ड, ऑन योर डिवाइसेस फॉर दैट मैटर. व्हाट मेक्स रीडिंग डिफिकल्ट फॉर यू, फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर, ठीक है? ये आपके बारे में हो, जरूरी नहीं है. व्हाट मेक्स रीडिंग डिफिकल्ट, रीडिंग की दिक्कत क्यों आ सकती है किसी को, आखिर मुश्किलें क्या होगी रीडिंग में? Okay, start putting in your answers. I'll wait for a minute or two and then I'll very quickly go to that page where we can see what are your answers, what everyone has written, right? It's always fun to see, what everyone has to offer, right? So we'll go there, we'll see. So all my students who are there at the YouTube also, you can do this. आप बस एक दूसरा ब्राउजर खोल के menti.com डालिए and वहां पे ये कोड 9150853 डाल के start putting in words. What makes reading difficult? Reading में क्या मुश्किल आ सकती है? Deepa ji, you'll have to give them one more minute because there is a small time lag between the YouTube and the current Zoom that we have. So if you are keeping 1 minute, keep 2 minutes. Sure, sir. Thank you for telling me that. Yeah.
Okay, in the meanwhile, let me see if somebody has started giving the answers. तो हम लोग वो try करते हैं. Okay, so this is the page where you're supposed to give me your answers. Even the teachers could write for that matter. You have to go to menti.com, use the code 9150853 and give me your answers. What makes reading difficult? Difficult to concentrate. Bilkul sahi. Yes, that is the point that everybody makes. Agree. And thank you for that answer. The more content, yeah, more the content is more. First time reading is all the more difficult. And if it's totally theory, tell me about it. Lot of theory. फिर कैसा पढ़ने का उसको, है ना? Tiring है ना थोड़ा? I prefer reading. Hey, wonderful. That's good to know. I read books and mangas. Okay, very nice. Nothing is difficult about reading. Okay, I've got some very good readers in the group here. Okay, very nice. Okay, thank you for the answers. I'll quickly, all right. It takes time to understand. Agree. Yes, sometimes it does take time to understand. More comparison, common, okay. The time, it is very time consuming. Yes, agree. So as you can see, more or less, that difficult to concentrate उतना बड़ा क्यों खड़ा है? Because similar lines पे काफी लोगों ने answers दिए हैं, right? Poor reading skills, yeah. If we know the technique, some work becomes easier if we know the technique. If we don't, then yeah, it is a hassle. I agree with you on that. Disturbed mind can't focus. When there is much noise, yeah, external factors are there. Agree. When we don't know the perfect meaning, that's a wonderful answer, right? कई बार हम लोग एक नए वर्ड को देख के डर जाते हैं और हम लोग का उसकी वजह से रीडिंग गड़बड़ मारता है. Okay, thank you so much, guys. Okay, I know you have wonderful answers to give, but I'll continue now. I'll go back so we can make sure that we cover up what is important as well, right? Sometimes it is boring, yeah. Wonderful, wonderful. Thank you so much for the answers. We'll stop this now. Okay, let's go back to our presentation. Okay. So yes, there are n number of things about reading that could go wrong. For those of us who have mastered it, हम जिन लोगों ने we like reading, तो हमारे लिए हाँ, there's nothing, हम तो read करना पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं, इसीलिए, right? So let's make sure that today at least few more people find the joy of reading, right? Okay, so let me continue. What usually goes wrong? I'll take that one thing that you mentioned first. Poor concentration. Ma'am, boring है, ध्यान देना मुश्किल है, right? But करना भी है ना, जरूरी भी है, ठीक है? तो किया क्या जाए? Now, poor concentration, let's not blame it on the person, right? हम लोग है ना, ज्यादातर जब हम लोग concentration की बात करते हैं, तो कई बार I even hear teachers discussing that students don't want to study, that's why they are not focused. It's not like that. Some of us, हमारा attention span थोड़ा कम रहता है, हमें दूसरों से ज्यादा मेहनत लगती है अपना attention को एक चीज में retain करने के लिए, right? So we can't say it's a fault in us, but it can be improved. It can be worked upon. All right. If you have poor concentration, lack of interest automatically आता है. Okay. We tend to jump
एक टेक्स्ट से दूसरे पे, या ठीक है अभी ये पढ़ लिया ना, अभी जल्दी बंद कर दिया. ओके, वी डोंट spend enough time with a certain content. Okay, so let's see what could be done about that. Don't give up too quick, no. है ना, हम लोग वो माउंटेन ड्यू के एड में सुनते हैं ना, डर के आगे जीत है, राइट? बोर्डम के आगे भी जीत है, राइट? What you have to do is refrain from jumping from one text to other. एक चीज पढ़ना शुरू किया, then taking too much time, it sounds boring. Wait. Continue reading, and you may find something interesting, right? Since you have to learn the skill, try not to jump text. एक चीज अगर लिया है, थोड़ा सा फोकस एक्सरसाइज जैसा उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना जरूरी है. Don't give up too quick. Okay, if I started reading, I have to enjoy it कभी का तभी. No, there are many things जिसका थोड़ा मजा लेट में पता चलता है. If you're not somebody who's into reading, it will take you time, but you'll get the hang of it. So थोड़ा सा spending a little more time with the text can really help. Okay, that's one thing. Add minutes to your efforts regularly. I am not telling you that stick to a text. That means आप पहले ही दिन आप बुक उठाएं, and क्योंकि मैम ने कहा कि जंप नहीं करना है, तो आज ही के दिन पूरा 1 घंटा ये लेके बैठेंगे. आज तो ये कर लेंगे, फिर कल हम लोग दोबारा रीडिंग की तरफ जाएंगे ही नहीं. Okay, ये प्रॉब्लम हो जाएगा. Okay, we want to make sure that it's a skill, so it needs to be developed, right? जैसे हम लोग स्पीकिंग स्किल्स की अगर बात करें, स्टेज पे जाने से डर लगता है, क्या किया जाए? स्टेज पे जाइए, राइट? टेक्निक सीखे, थोड़ा थोड़ा वक्त जितना आप स्टेज पे बिताते हैं, वैसे धीरे धीरे आपका वो स्टेज फियर गेट्स टेकन कंट्रोल ऑफ, राइट? टेक्निक्स के हिसाब से जाता है, बराबर, पर वहां पे होना जरूरी है. ओके, स्विमिंग, until and unless you are in water, how do you learn, right? But the very first day we don't swim till we drown, then तो हो गया, right? That is not the thing. If you're trying to work on your reading skills, one thing that is important is start with a certain limited time. Okay, they say usually 15 to 20 minutes of time is a good way. Okay, 15 मिनट शुरुआती तौर पे इतना कर सकते हैं क्या? पर उसमें एक चीज याद रखिएगा, जो भी आइडिया शुरू किया है, एटलीस्ट वन आइडिया यू कंप्लीट. ओके, एक चीज के बारे में अगर पढ़ना शुरू किया है, तो हर, जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं, उसमें सब पॉइंट्स बहुत से रहते हैं, तो एटलीस्ट एक सब पॉइंट तो पूरा जरूर पढ़ना, राइट? Finish the idea. Don't leave an idea unfinished. Our mind, the way it works. Now imagine this. When I tell you, don't think about half an apple. Okay? Or even if I tell you, think about a full apple. What is happening? Don't think बोला वो एक चीज है, but half full, ये जो words मैं use कर रही हूँ, that apple picture comes complete first. Even if you have to think of half an apple, पहले complete आता है, फिर ही half आता है, right? The mind works in terms of images, right? The more complete the image is for it, the more complete the information, that much easier for it to absorb and come back to it, right? So at least एक idea शुरुआती तौर पे complete करने की कोशिश करें, 15 मिनट शुरुआत में. Next day, let's make it 20. Okay? धीरे धीरे करके let's keep on adding time. थोड़ा थोड़ा effort करके keep on adding time. Don't go full on into it with a very long span. That makes it difficult. Okay, if you're not a regular reader, right? Combining listening helps. Now इसमें एक चीज बहुत important है. ये point दोबारा आया है. ये समझिए. हम सबका तरीका सीखने का अलग होता है. Okay, some of us visually we learn better, right? Some of us when we do things we learn better. Some of us when we hear we understand, right? Some of us if it is imaginative, creative, हमारे intelligences के हिसाब से, multiple intelligences, right? हम सबका अपना अपना तरीका है सीखने का. इसीलिए अगर आप दो skills को combine करते हैं, अगर आपका सीखने का तरीका थोड़ा अलग है, तो it helps to gather data that way. बराबर है? So when you combine reading and listening together, when you start with an audio book and the text in front of you, you're listening and you're reading, you tend to grasp the skill faster, right? So जिनका concentration नहीं रहता है, मैम मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुछ और ध्यान में आता है, now you're even listening to the text. आप सुन रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं, तो फोकस हटने के chances थोड़े कम हो जाते हैं. हाँ, you can still think about something if you want to, right? But the effort that you take to concentrate थोड़ा अपने लिए आसान हो जाएगा if you combine. Try doing that.
Okay, pick on an audio book and उसी का टेक्स्ट अवेलेबल है. You go to Google, there's Loyal Books नाम का एक वेबसाइट जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं. Okay, you can try using that. इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिएगा जो बहुत जरूरी है. Don't jump into listening to novels and पुराने वाला novels, romantic era या Victorian era के novels जिनकी भाषा बहुत ज्यादा अलग थी. ठीक है, don't jump into picking up those kind of texts. Business magazines, Time magazine जैसे magazines, Reader's Digest, right? News reports, okay, documentaries, ऐसी वाली चीजें लेने का एक फायदा है. You know what is that? इसमें यूज की जाने वाली भाषा आप अभी बात करते वक्त कैसे vocabulary यूज करते हैं वैसी भाषा रहेगी, right? So pick on these kind of texts that when you read, first it is easy for you to understand. The language is one that you are usually exposed to. 2, vocabulary बहुत ज्यादा difficult नहीं रहेगी. 3, इनके sentences, the documentaries, the news reports and all that, sentences इनके थोड़े छोटे छोटे रहते हैं क्योंकि ये facts की बात करते हैं, right? Stories वगैरह में थोड़ा लंबा sentences जाने के chances हैं. तो जिनका concentration में issue है, if you go for that kind of content, it becomes a little more difficult. So go for these kind of text जिसमें sentence structure ही ऐसा है कि वो आपकी concentration को help करता है. Right? Combine with audiobooks and make sure you don't leave it quickly. This happens, it can take care of poor concentration. Right? Eye fixation. ये दूसरा एक problem है. Okay, it works at 2 levels. हमें से कुछ लोग बुक कैसे पढ़ते पता है? So close. Right? इसका एक और मतलब ये भी है, when you find a difficult word, one of you had mentioned in that Mentimeter, when you find a difficult word, सब छोड़ के पहले word का meaning ढूंढने जाओ, right? ये दोनों ही चीजें आपकी reading skill को improve करने में मदद नहीं करती हैं, right? So what do we do about this? Hold the text at a comfortable distance. Why? जब हम चीजें read करते हैं, जैसे कि जब हम सुनते हैं, Now imagine, आने वाले मेरे सेंटेंस को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? Imagine I were to talk to you like this. Would you be able to follow what I am saying, or would you rather want me to speak in a fluent manner? रुक रुक के एक एक वर्ड करके जाता है तो सुनते वक्त भी उसका मीनिंग समझ नहीं आता है. Somewhere this applies to reading also. Okay, reading word by word. Okay, आप वर्ड तो पढ़ लेते हैं पर उसका मीनिंग, उसका ओवरऑल मैसेज, जो कॉन्टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, ओवरऑल व्हाट इज द टेक्स्ट ट्राइंग टू कन्वे, that is left out when you do word by word reading. What happens when you're holding a text too close? You are doing word by word reading. हमारा eye gaze, the span of eyesight, the way it works, it is important you hold at least a few words together while you're reading. Why? Only then it makes sense. Just as I was breaking every word and speaking right now, it would have been very difficult, right? Same applies to reading as well. So it's very important that you read it at a go. तो थोड़ा comfortable distance पे रखिए, इतना कि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, आपको पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो, पर इतना पास नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड रीडिंग करने लगे. ठीक है, तो ये एक चीज करना बहुत जरूरी है. Divided into units. Now in the previous point itself I told you that एक साथ पूरा सारा पढ़ने को मत बैठे, एटलीस्ट एक आइडिया तो कंप्लीट करें. So if you feel that oh it's too much for me, take a certain idea, finish that much at least. ये पहला वाला अपना पॉइंट था कंसंट्रेशन के लिए, राइट? रीडिंग पे जब आई फिक्सेशन पे आते हैं, ये अब हम लोग स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे. ऑलराइट, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एज इन सेंटेंस का, लेट्स से अ सेंटेंस हैज 10 वर्ड्स, नोबडी इज काउंटिंग. ओके, हम लोग देखते हैं नजर में तो हमको वैसे ही आइडिया आ जाता है 10 से 12 वर्ड होंगे वैसा, राइट? तो कम से कम 4 से 5 वर्ड्स को अपने आई साइट में साथ में रख के पढ़िए. डोंट फिक्स ऑन वन वर्ड ईच. डिवाइड द सेंटेंस स्ट्रक्चर इनटू यूनिट्स, राइट? तो आप साथ में कुछ वर्ड्स को रख के आप वैसे पढ़ेंगे. डोंट रश टू द डिक्शनरी. और ये कैसे इंग्लिश मैम है, इंग्लिश टीचरों के मैम बोल रहे हैं कि डिक्शनरी देखने मत जाओ. नहीं, आइडेंट से डिक्शनरी देखने मत जाओ. मैं ये बोल रही हूँ
अपना रीडिंग बीच में बंद करके डिक्शनरी की तरफ मत भागिएगा। क्यों? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, देन आई एक्सप्लेन दिस। ठीक है, आई एम गोना रीड आउट समथिंग फॉर यू। अगर वर्कशॉप होता आई वुड हैव मेड यू रीड इट, बट आई विल रीड इट आउट फॉर यू। ठीक है? While working in a group or a team, consensus becomes crucial. This applies to group discussions too. After listening to all perspectives, participants develop a proposal that honors the wisdom of the group. When people think and talk together, they can find a solution or proposal to move forward as a group. Right? Now imagine कीजिए किसी को अगर ये वर्ड कंसेंसस जो पहले ही लाइन में है, कंसेंसस बिकम्स क्रूशियल लिखा है, लेट्स इमेजिन दैट किसी को ये कंसेंसस वर्ड का मतलब नहीं पता था, राइट? अब वो इधर छोड़ के डिक्शनरी में ढूंढने जाएगा, राइट? डिक्शनरी में आप जब कोई वर्ड ढूंढने जाते हैं, इंग्लिश में एक चीज थोड़ी पेचीदा है, ओके, दैट्स अ लिटिल डिफिकल्टी इन इंग्लिश. One word could mean n number of things. Okay, what makes you sure that वो given text में उस word का meaning वही है? Right? For example, if I were to give you the word track, okay, T-R-A-C-K, track. Okay, track का मतलब ये हो सकता है I track somebody down, किसी को ढूंढ लिया. Music track, है ना, गाना, उसे भी म्यूजिक ट्रैक कहते हैं. या फिर ट्रैक कुड आल्सो मीन फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल, एनिमल्स का फुटप्रिंट्स को हम लोग ट्रैक कहते हैं, राइट? इसमें से कौन सा यहाँ अप्लाई होगा कैसे मालूम पड़ेगा? इफ आई वाज रीडिंग अ कंटेक्स्ट, आई वाज रीडिंग अ पैसेज, तो उसमें क्या तरीके से वो वर्ड यूज हुआ है वो जानने के लिए पैसेज किस बारे में है जानना जरूरी हो जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू रीडिंग. ओके, नाउ इन दिस केस कंसेंसस बिकम क्रूशियल लिखा, उसके तुरंत बाद आया आफ्टर लिसनिंग टू ऑल पर्सपेक्टिव्स, participants develop a proposal that honors the wisdom of the group, right? So when people think and talk together, they can find a solution or proposal to move forward as a group, which means साथ मिलकर एक चीज के बारे में find out किया हुआ decision या solution, right? कहीं ना कहीं, now this is only a part of the text. If I would have given you the entire text and you were not familiar with the word consensus, आप पढ़ते पढ़ते आपको ख्याल आ ही जाता. ये हम में से सभी के साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा that you are reading a text and probably because you were too lazy, you did not get up, you just continued. But because you continued, what happened is, without looking at a dictionary, you understood the meaning of the words, right? The context is very important, right? Passage किस बारे में है, क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? बकरी टाकलं नाही, मॅच टाकलं काय लागला ना, नाही वाला प्रणव मॅडम कोण थांबले पुढे. Somebody is unmuted. Could you please go on mute? Please mute yourself. Yes, we can go ahead. All right. Sorry about that. My internet connection seems unstable today. 1 second. I'll start sharing my screen again. Okay. Okay. This is just another example of a similar thing. अभी इसमें वो word बाद में आया है. Sometimes groups reach a point where they fail to make an actionable plan or proposal. Each one sticks to their own viewpoint without looking at the larger picture or a decision that could offer solutions. Their failure to reach consensus cost them their marks. Okay, what they did not do, they did not reach a consensus, right? So कई बार आप कंटिन्यू करें रीडिंग, बिना उसे रीडिंग को डिस्टर्ब किए डिक्शनरी के पास जाए बिना, तो भी वर्ड का मीनिंग मिलता है एंड समवेयर मैसेज ज्यादा क्लियर होता है. ऑलराइट, सो दैट इज अ गुड वे ऑफ गोइंग अहेड. Remember, context matters. Grouping of words is important, not single words. Right? Now, having said this, मैम ने इतना सारा बोला, अभी मैं आपसे कुछ करवाती हूँ इस पे, ठीक है? Speed of reading, that really matters. Now, automatically, when I'm speaking one word at a time, ठीक है?
और इसके कंपैरिजन में व्हेन आई टेक फ्यू वर्ड्स टुगेदर एंड आई एम रीडिंग, मेरा स्पीड सेकंड वाले में ऑब्वियसली ज्यादा होगा. आई एम ग्रुपिंग देम टुगेदर एंड आई एम रीडिंग. Somewhere because I'm grouping them together, what happens is my understanding of the content is also better, right? So speed अपने आप बढ़ती है. A good reading speed also makes sure that you understand content better. And what is the best part? You remember the content better. ये भी आता है उसमें. ठीक है? So we're going to do a little bit of reading testing today. ठीक है? Now this is going to be very fast. We are going to start from 200 words per minute, moving on to 400 words per minute. अपने आप इसका स्पीड बढ़ने वाला है. All right? All you have to do is keep looking at the screen and जो words आते जाते आप उनको read करते रहिए. ठीक है? The words will keep coming. You keep reading them. That's what you have to do. With me on this? Let's do this. All right. There's a close relation between reading and understanding. All right. When you're reading, let me see how many of us actually understand when it's going that fast. All right. Ready? Ready? I'll take a few seconds before I start the screen. So my friends on YouTube, they have time to prepare. Okay. Now the screen comes. जिसमें फटाफट वर्ड्स आएंगे. हाँ, फोकस करना और वर्ड्स को एकदम जो भी वर्ड्स आता है फटाफट लेते जाना. ओके, लेट्स सी हाउ फास्ट यू कैन रीड. राइट, एंड हियर वी गो. So sorry, I think that stopped because of internet issues. Let's start sharing the screen again. Okay, I'll stop this now. Okay. Speed of reading really matters. You know, now when I do these kind of exercises with my students, I ask them that जिसका जब भी आप रुक गए ना रीड करना, फटाफट हाथ ऊंचा कर देना. And it's actually amazing to see how some of them पहले थोड़ी देर में they're like, मैम मेरा हो गया, I can't go beyond this. Okay, they get very baffled by the speed of the words that are coming in. Some of them they are able to continue. Some of them they stop initially, but they will still continue, and then they say that मैम एक मिनट थोड़ा सा वो रीड करना कोशिश किया ना, उसके बाद थोड़ा आसान हो गया. राइट, वेरी फ्यू एक्चुअली रीच टिल द लास्ट मिनट. अब उसमें एक कैच था. ओके, मैंने लिखा था ऊपर 400 वर्ड्स पर मिनट, बट एक्चुअली इट हैड इंक्रीज. ओके, वी स्टार्टेड विद 200 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड, वी वेंट टू 600 वर्ड्स पर मिनट तक. ओके, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. बट द ब्यूटी ऑफ इट वाज द पीपल हु डू नॉट गिव अप व्हाइल द स्पीड चेंजेस, एक बार अटके फिर भी दे कंटिन्यू, उनको बाद में जाके फेमिलियरिटी की वजह से दे आर एबल टू रीड इट प्रॉपर्ली. राइट, अभी लेट मी गिव यू दिस एस्पेक्ट ऑफ इट, देन उसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. स्पीड ऑफ रीडिंग रियली मैटर्स. हम कोई कंटेंट को सिर्फ मेमोरी के लिए अगर पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेमोराइज इट, याद रखना है इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप जितना स्लो, जितना फोकस्ड पढ़ते हैं उतना ज्यादा आपको याद रह जाता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, आई एम ओनली मेकिंग श्योर दैट आई रिमेंबर द वर्ड. सो इवन रिपीटिंग इट एन नंबर ऑफ टाइम्स एज आई रीड समथिंग एंड आई डू इट अगेन एंड अगेन, दैट ऑल्सो हेल्प. उस टाइम स्पीड बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है. व्हेन आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग,
उसको बोलने का तरीका, उसको ठीक तरह से प्रोनाउंस करने का तरीका, मेरा वोकैबुलरी बिल्डअप करने का तरीका, राइट? कुछ चीजें अगर मैं उसमें से ले रही हूँ, आई एम एक्चुअली गैदरिंग समथिंग फ्रॉम दैट रीडिंग एक्सपीरियंस, देन 100 to 200 वर्ड्स, द स्पीड एट विच वी स्टार्टेड दैट स्कोर। ओके, वो स्पीड वर्ड लिख के स्टार्टिंग के फ्यू वर्ड्स बड़े आराम से पढ़ने में आए होंगे, उसके बाद जो स्पीड बढ़ा तब किस लोगों को दिक्कत आई होगी। दैट स्टार्टिंग का फर्स्ट फ्यू वर्ड्स दैट यू सॉ, those were at 200 words per minute, right? So that is an ideal kind of speed, reading speed for that kind of content, right? As you can see, purpose के हिसाब से reading का speed decide किया जा रहा है। comprehension के लिए मुझे समझना है और अपने वर्ड्स में किसी को ये बात समझा पाना है, राइट? तब जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा आप उसको समझ पाते हैं, बट 200 to 400 के बीच का वर्ड्स पर मिनट, एंड दैट इज आइडियली कंसिडर्ड टू बी अ गुड रीडिंग स्पीड, बिकॉज ज्यादातर अगर आप बात समझ गए हैं और अपने वर्ड्स में समझा पा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट राइटर के वर्ड्स याद नहीं होंगे पर कंटेंट तो याद है ना, क्योंकि आपने अपने हिसाब से उसे एनालाइज किया है, राइट? सो इट काइंड ऑफ सर्व्स अ बेटर पर्पस व्हेन यू डू इट दैट वे। स्किमिंग, मुझे सिर्फ जानना है कि ये चीज है किस बारे में, मुझे पूरा डिटेल नहीं चाहिए, राइट? देन 400 to 700 वर्ड्स पर मिनट, इसमें हम लोग एक्चुअली एडिट्स बहुत मारते हैं। विल कम टू स्किमिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, उस टाइम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक रीडिंग स्पीड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ रीडिंग स्पीड बेस्ड ऑन द पर्पस, एंड गुड रीडिंग स्पीड इज यूजुअली कंसिडर्ड बिटवीन 250 to 400 वर्ड्स पर मिनट। ज्यादातर लोगों का 200 तक होता है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद अ सर्टेन लैंग्वेज, आपका 200 तक का रीडिंग स्पीड होता है। But if you want to be like even better, fluency and comprehension के terms में, then you need to practice speed reading. Okay? Online में there are n number of activities. मैं आपको जो content इसका share करूंगी, तो I'm going to share one activity also with you, जहाँ पे you can check your reading speed, right? At your own pace. आप खुद करके देखिएगा, उसमें पता चलता है कि reading speed कहाँ पे है। And all you have to do is ऐसी activities बीच-बीच में करते रहिए, automatically आपका reading speed बढ़ता है, because the more you adapt, the more familiar you are, the better it gets, right? Let me introduce you to this lady. Her name is Anne Jones, okay, world speed reading record holder. She finished a 250,000 word novel by reading at a shocking speed of, we are talking hundreds. Her reading speed is 4,251 words per minute. Okay, मैम पढ़ते हैं कि सिर्फ पन्ने घुमा लेते हैं, रोबोट है क्या? नहीं, कीवर्ड्स, ओके, आपकी नजर ना बड़ी तेज होती है। आप लोगों ने कई बार व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस देखे होंगे जहां सारे वर्ड्स उलट पुलट कर दिए जाते हैं और उनका सिर्फ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, एक वर्ड की स्पेलिंग का पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम रखा होगा, अंदर का स्पेलिंग पूरा गड़बड़ा गया होगा, बट जिस तरह से वो दिया जाता है हम लोग फिर भी समझ जाते हैं कि वो वर्ड क्या है। Most of us are able to read it, right? Our eye very quickly sends messages to the mind, all right? Much more than, she has 7 gold medals for speed reading, but coming to the point that I was making, much more than your how you vocalize reading, ठीक है? कभी ध्यान दिया है या फिर अभी जब भी मैंने आपको वो स्पीड में रीड करने के लिए दिया था, आप में से कितने लोग, तो आपको खुद को पता होगा, आप जस्ट सोचिए आप में से कितने लोग थे अंदर अब बाहर बोलना एक बात है, लाइक वो स्पीड रीडिंग इज ऐसा जोर से बोलना वो एक बात है, बट व्हाइल यू आर रीडिंग इट अंदर से ऐसा द इनर वॉइस इज रीडिंग विद यू, अंदर से यू कैन हियर अ वॉइस, यू नो, दैट इज डूइंग द रीडिंग पार्ट ऑफ द जॉब, राइट? दैट स्लोज यू डाउन, ओके? रीडिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू रिलाई मोर ऑन द आई साइड, लेस ऑन द इनर वॉइस, ओके? तो आप रीड करते वक्त अगर अंदर जो आवाज चल रही है उसको बोलेंगे कि चल मैच कर मेरे आई साइड का स्पीड, नॉट पॉसिबल। हमारे विजन की स्पीड बहुत ज्यादा है और हमारा विजन जिन चीजों को ग्रुप करके देखता जाता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसको कॉम्प्रिहेंड करता ही है। तो स्पीड रीडिंग का मेन फंडा यही है कि आप अपने स्पीच के स्पीड से ज्यादा आंखों से विजन में जो वर्ड्स आते हैं उस पर रिलाई करके बढ़ाते जाओ। दैट्स व्हाई स्पीड रीडिंग एक्टिविटीज इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, राइट? शेयर power of your brain and the sight, when they combine they work magic. That's how it is, right? Now I'm going to do a little change in what I had given you previously, okay? Read as fast as you can the content that I'm giving you right now, okay? ये थोड़ा अलग है, जो आपको previously दिया था उससे थोड़ा सा अलग है, but you just have to read,
एक शर्त है लेकिन, one condition applies. This time don't vocalize it, no inner voice either. When you're reading, अंदर से नहीं, okay? Eyes, the way your eyes read it, let the message go directly here. वो आवाज को अभी नहीं, एकदम बाहर से भी आवाज नहीं, अंदर तो नहीं. What your eyes see, let the brain get the message direct. Okay? Ready for this? Ready for this? Brace yourself. All right, here we go. How did that go? I'm sure आप में से काफी लोगों को कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जहां वन वर्ड आ रहा था फटाफट, ये जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स साथ में आ रहे थे, पढ़ने में थोड़ा बेटर लगा होगा. Those of you who are good readers, आप लोगों को दोनों आसान लगा होगा. Those of you who have very advanced reading skills, आप लोग को दोनों इक्वली इजी लगा होगा. But those of us who are into reading, हम लोग के स्किल्स अभी डेवलप और करना है हमें, कहीं ना कहीं दैट ग्रुप वर्ड्स का ग्रुपिंग साथ में आना, दैट वुड हैव हेल्प. 5 वर्ड्स का 1 2 3 4 5 6 ऐसे फ्लिप होके जाना, उन 5 वर्ड्स का 3 सेकंड आपके सामने साथ में रुकना. The second option is what makes it easier for us to understand the content better. Okay, hence just showing you an example of how reading words together and going by sight, when you put them together, उस स्पीड में भी हम ज्यादा समझ पाते हैं, right? And if you're covering more content in less time, it doesn't seem that taxing after all. Okay, concentration का इशू कब, जब बहुत ज्यादा वक्त लगता है. अगर आप इस तरह से रीड कर रहे हैं, कम वक्त में आप ज्यादा कंटेंट कवर कर रहे हैं, right? But then this does need practice, no doubts about that, right? So practice. All right, do activities of reading. Online में काफी available है, a few I will share with you as well, right? Practice. The more you practice, the better it gets. Don't focus on one word. Okay, as we said, group the words together. Divide them into units. एक पूरा content है, उसको इतना साथ में पढ़ना है, right? Object. ये एक और चीज है जो हम करते हैं. All right. Small children, you know, the reason they are asked to hold a pen to the book this way, right? The idea is, आप जब रीडिंग जब सीख रहे होते हैं, तब जरूरी है कि आप तभी एक्चुअली कंटेंट से ज्यादा ना, कंटेंट का मैसेज समझ आने से ज्यादा आप रीडिंग सीख रहे होते हैं. कैन आई रीड दिस वर्ड? ओके, डू आई प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली? इज दिस वर्ड ए बी सी साथ में आया, ये बराबर है क्या? ये CAT आया तो कैट ही होगा, राइट? बट हम एक्चुअली बिल्ली सोच के पूरा वैसा नहीं, वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन गेटिंग द रीडिंग राइट. ऐसे में वो बच्चा लाइन स्किप ना करे, ये बहुत जरूरी है. सो ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू स्पेसिफिकली टू मेक श्योर दैट आप लाइन स्किप ना करें. ये एक चीज. दूसरा, एज यू ग्रो, प्लीज मेक श्योर द ऑब्जेक्ट मूव्स फास्ट. अदरवाइज वी आर गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस. हम लोग वो एक वर्ड, एक पेन ऐसा एक वर्ड पे रख के धीरे धीरे जाएंगे. प्रॉब्लम वही आई. अभी स्लो रीडिंग फेज एंड समझ में पूरा मैसेज आएगा नहीं, हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड रीडिंग करते जाएंगे. इट्स अ रीडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोनाउंसिएशन. Doesn't help learning, right? So if you do insist on using an object, हम में से काफी लोग since childhood we have been using it. So out of nowhere, if I suddenly tell you that don't use an object, that could be a little difficult, right? So there's nothing wrong if you want to use an object. Remember, उसका function ये है कि आप line skip ना करें. On that very line, it will not point to each and every word. What is it supposed to do? Go fast. Go fast. आंखें तेज. Right? So you don't go ekdam slow with that pen. No, you go fast. Your eyes follow quickly. Okay? Maintain the speed. अगर वैसे आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो आपका रीडिंग फास्ट रहता है एंड आपको कंटेंट का मैसेज ज्यादा अच्छे से मिलता है.
ओके, ट्राई डूइंग दैट। सेम कंटेंट को एक बार वो एक एक करके धीरे धीरे पढ़ना, एक बार फुल स्पीड में पेन के साथ घुमा के देखना। आफ्टर अ व्हाइल व्हेन यू गेट बैक टू इट, व्हिच वन डू यू अंडरस्टैंड बेटर, राइट? Go with an open mind and try this and you'll see the difference, right? Okay, this is another thing. Rocking chair, ठीक है? कभी ऐसा नोट किया है, हम लोग रीड कर रहे होते हैं, हम या कोई और for that matter, when you're reading, अगर आप कहीं पे अटक गए, what do? You go back to the previous word and you start reading. So this has happened and so this has happened and आप रिपीट करते हो, दोबारा जो चीज आप अब रीड करके फिनिश कर चुके, आप दोबारा उस पे जाते हो, फिर आप वापस आगे आते हो। रिग्रेशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है? स्पीड रीडिंग इसमें भी हेल्प करता है। दिक्कत क्या आती है, आपका माइंड हमेशा चीजें फ्रेमवर्क, एक पैटर्न में देखता है। आपने इतनी लकीर ड्रॉ कर दी, माइंड को पता है लकीर ड्रॉ हो गई, यू डोंट रियली हैव टू गो बैक ऑन इट, ओके? बी इट इन स्पीच, बी इट इन रीडिंग, ठीक है? दोनों चीजों में आप जहां रुके बने उतना पूरी कोशिश कीजिए कि आप वहीं से आगे बढ़ें। डोंट गो बैक ऑन इट, ओके? व्हेन यू हैव रिग्रेशन, व्हाट हैपेंस इज फ्लो ब्रेक्स automatically. Now it is the content, the structure that becomes important, not the message, not the understanding, right? So रुक भी गए हैं बट कंटिन्यू कर देते हैं ना, वो फ्लो बना रहता है। That's the beauty of it, right? Flow बना रहता है। So just continue reading, right? And you will understand. This guy will do the job. Don't worry about it. Okay? Back and forth नहीं जाने का। आप जहां से रुके वहीं से शुरू करें। वापस पीछे जाके वो वर्ड दोबारा दोहराने का नहीं। Don't do that. Alright? So इससे भी आपका रीडिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं and we can make sure that you understand the content better. Now, look at these two pictures on the screen. Alright? Remember when we were in school, some of you in college, I'm not sure if your teachers make you do that anymore in college level, but in school it was definitely there that one of the students would be asked to read the textbook. एक को खड़ा करके बोलेंगे आप सबके लिए जरा रीडिंग कर दीजिए, राइट? नाउ ये स्टूडेंट जब जोर से रीड कर रहा होगा, ओके, इसका ध्यान ज्यादातर किस चीज पे होगा? गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट, ओके, मेकिंग श्योर ही गेट्स द वर्ड राइट। द होल टेंशन इज अबाउट सब लोग सुन रहे हैं, ये ठीक से बोलना बहुत जरूरी है ना? राइट? नाउ हियर इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, राइट? लुक एट द सेकंड पिक्चर. When somebody is reading and I'm listening, all right, I'm not worried about what others are thinking because whatever is going on in my mind, somebody else is reading. I'm not the one being judged, right? Anyway, that listening well aspect will take up later. Coming to the reading part again. Whenever you're reading aloud, ठीक है, अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया है, आपने बुक बंद कर दी है, अब आप जोर से बोल के देख रहे हैं मुझे कितना याद है, ये बिल्कुल सही, आप ये कर सकते हैं। बट while you're reading, फर्स्ट टाइम वो चीज को आप पहली बार जब पढ़े तब आप जोर जोर से अगर पढ़ रहे हैं, we have a problem, okay, we have a slight problem there. What is that problem? It slows you down, right? हमने तो बोला अंदर की आवाज को भी चुप, मैं आंखों से फटाफट पढ़ रहा हूँ, राइट? अब इसमें हम लोग अगर जोर जोर से चिल्ला के पढ़ेंगे तो, right, it slows you down. Remember I said when you're reading a content, when you're preparing for the exam, आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ कंटेंट आपका रिकॉल करना ये अलग बात है, राइट? आपका दिया गया टेक्स्ट को स्टार्ट से पढ़ना शुरू करना, उस वक्त जोर से पढ़ना, इट स्लोज यू डाउन। एंड ऐसा आप इस तरह से पढ़ा हुआ कंटेंट हमें कम याद रहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट हमें कम याद रहता है, बिकॉज हमारा ध्यान तभी प्रोनाउंसिएशन में चला जाता है। मैं एक वर्ड गलत बोल जाऊं क्योंकि मैं इतना जोर से बोल रही हूँ, मेरा ध्यान उधर जाएगा, राइट? So when you are trying to understand the content, don't read out aloud. Okay, don't read out aloud. When you're recalling, आप जब पढ़ के खत्म हो गया बंद करके दोबारा देखता हूँ कितना याद है, उस टाइम बोल सकते हो, बिकॉज हम में से कुछ लोग comfortable that way. That time you can do that. But while you're reading, don't read out aloud to yourself. Don't do that. Okay? Focus on the eyesight and read. Otherwise, articulation, तेरा pronunciation कैसा आ रहा है, राइट एक्सप्रेशन है कि नहीं, मैंने वो ठीक से बोला कि नहीं, इस पे ध्यान चला जाता है जबकि ध्यान कंटेंट पे होना चाहिए था, राइट? सो दिस यूजुअली गोज रॉन्ग। रीड फॉर योरसेल्फ ना बाबा, ठीक है? हम अपने लिए पढ़ रहे हैं तो बुक सामने है, पढ़ो ना, जोर से कहीं को पढ़ो, ओके? रीड क्विकली,
at your own pace. You're understanding it, right? So वो होगा. So read it on your pace. Know that it's okay and you'll learn. Anytime you feel अरे मैम बोल रही थी स्पीड रीडिंग करो, यहाँ तो मेरा इतना स्पीड में नहीं हुआ. सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला था, don't jump to conclusions too quickly. सबसे पहली चीज हमने वो कही थी. So when you start doing this, initially अगर थोड़ा डिफिकल्टी आता है, फिक्र नहीं ना, ये अपने लिए है, खुद के लिए करना है, स्किल डेवलप करना है, दोबारा करते हैं, right? So it's okay. It takes time. Any skill takes time. So just practice, right? Repeat. Know the purpose of your reading. हमने वो याद है स्पीड की बात की थी, रीडिंग स्पीड कौन से कभी मेमोराइजेशन के लिए कितना वगैरह वगैरह हमने बात की, बराबर. तो अलग अलग था. पर्पस, आप किस लिए रीडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपका रीडिंग कैसे जाना चाहिए, बराबर है. अब when I'm talking about purpose, that brings us to the other part of it, that is the strategy. ठीक है. Now look at the screen. I'm giving you 3 things. शॉर्ट स्टोरीज है, न्यूज़पेपर है और एक रिसर्च पेपर है. ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज है, न्यूज़पेपर है और रिसर्च पेपर है. अभी ये रिसर्च पेपर हमने क्यों लिया था, आई एम गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस. ओके, ये रिसर्च पेपर मैंने लिया था बिकॉज मुझे मेरे एक सर ने एक सब्जेक्ट में जो एक प्रोजेक्ट पे काम करने को बोला है, वो जो प्रोजेक्ट है या वो जो चीज वॉट एवर वर्क हैज बीन गिवन टू मी, असाइनमेंट जो दिया गया है सर का, उस असाइनमेंट में अगर मैं ये रिसर्च पेपर पढ़ लेता हूं ना तो मैं और बेटर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, राइट. नाउ अंडरस्टैंड दिस. आर यू गोइंग टू रीड दैट शॉर्ट स्टोरीज, दैट न्यूज़पेपर एंड दैट रिसर्च पेपर इन द सेम वे? नहीं ना. हाउ मेनी ऑफ अस रीड द न्यूज़पेपर? आई थिंक ज्यादातर हम लोग न्यूज़पेपर का कैसे करते हैं, जैसे ही हाथ में आया फटाफट हेडलाइंस देख ली, ठीक है, फटाफट घुमा के हेडलाइंस देख ली. ऐसी वाली न्यूज जहां पे हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है हम वहां पे जाके पूरा पढ़ते हैं. बाकी हर एड, हर हर एडवर्टाइजमेंट, हर सेलिब्रिटी का न्यूज, पेज 3 पेज, हर पेज को हम लोग पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते. लाइक अ रिसर्च पेपर, नो वी डोंट. Okay, sorry about that again. Let me start sharing the screen. Okay. So the purpose is very important, right? Short story I'm reading because I like to read stories, right? I enjoy reading it. It's a pleasure thing, right? You read, you enjoy it. It's as simple as that, right? When it comes to the newspaper, it's about gathering facts. I don't go in depth into it, reading every word. No. Headings, subheadings, certain things that I'm interested in are detailed into that. That's it. Comes to a research paper, this I'm going to read thoroughly. This is something जिसमें से आई हुई बात मुझे कहीं कनेक्ट करना है, एनालाइज करना है, इसके बेसिस पे अपने काम में सुधार करके आगे डेवलप करना है. Lots to do with that content. So I'm definitely gonna read it with lot of precision. वहां पे फोकस हमारा ज्यादा रहेगा. So the major factor that affects your reading is the purpose. किस वजह से रीडिंग हो रही है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बराबर है. So that brings us to the reading strategies. All right, the last part of it. Why are we reading? Is it for the sake of information or for the sake of pleasure? That is important. Okay. Why do I plan? How do I plan to use it? अभी मैंने कुछ चीज पढ़ी, मैम उससे मेरा वोकैबुलरी बढ़ेगा, उससे ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना जो मैं अपने स्पीच में भी यूज कर सकता हूँ. इट्स फॉर फ्लुएंसी. Research paper, it's for understanding. I'm going to use that information. Okay, I'm going to apply that. There's a lot of analysis involved. बराबर है? What are we looking for? अब इसमें भी रीडिंग स्टाइल बदलता है. कॉम्प्रिहेंशन दिया मैंने आपको, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया, उसके साथ सवाल भी दिए, ठीक है. अब आपको कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज उन सवालों के लिए ही पढ़ रहे हो, तो इट विल बी वेरी स्पेसिफिक. ये क्वेश्चन का आंसर किधर आएगा, पकड़ा यहाँ पे डाला, फटाफट, राइट. रिसर्च पेपर, now it's about understanding the whole thing. It's extensive. Okay, बहुत ज्यादा आप अच्छे से उसको रीड करोगे, right? So these factors influence how you're going to read your content. बराबर है? So let's do this activity now. All right, very quickly. I hope I don't get thrown out of the meet again. This internet is pretty unstable today. All right.
So what you're going to do for me is I'm going to show you a छोटा सा passage, एकदम छोटा सा, हाँ, और मैं एक ही सवाल पूछूंगी उस पे, I promise. Okay, एक छोटा सा passage है. All teachers also can try this. You have to just read this passage for me. All right. Then I will ask you a question on it, and I'll show you the passage again after the question. No doubt. ठीक है? But it is not going to be a direct question. Okay. Reading में दो तरह के questions हम पूछ सकते हैं. एक है direct, एक है inferential. ठीक है? जहाँ पे आपको ओवरऑल समझ के उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा. Alright? ये थोड़ा उस लेवल पे जाएगा. Okay. Just read the text. आपको जितने बार चाहिए आप फास्ट पढ़िएगा, हाँ प्लीज. Don't go to in any case, no. Fast. Okay. I think most of us must have read this by now. Now what I'm going to do is, मैं आपको यही टेक्स्ट उसके क्वेश्चन के साथ देती हूँ. ठीक है? क्वेश्चन के साथ कि आखिर मुझे आपसे जानना क्या था इसके बारे में. Let's do that. All you have to do for me is choose an appropriate heading. 3 ऑप्शंस हैं. इसमें से आप मुझे एक appropriate heading, ये जो कंटेंट है उसके लिए कौन सा हेडिंग बेस्ट रहेगा, ठीक है, आपको मुझे वो देना है. दिस यू कैन डू ऑन menti.com. अभी आपने यूज किया था, you're familiar with this now, right? So just go to menti.com and use this code 53784696. ठीक है, बहुत लंबा कोड है, so sorry, but then it generates on its own, हाँ. So 53784696 ये कोड पे, and you give me an answer A, B या C. आपको सिर्फ अपना पोल टाइप कर देना है वहां पे. That's it. You don't even have to type too much. It's a poll. So you just have to tell me which is the answer. कौन सा होगा? We'll go to Menti and see what everybody is answered, हाँ, थोड़ी देर में. पहले okay, let's go to Menti and see if you have answered to this one. Oh wow. 4 people said GM and cancer. 8 people say GM's role in healthcare. All right, more people listing it out. Wonderful. You guys are an amazing audience. Good, you're responding so well. Very nice. पंडा 3 पे भारी है, हाँ. जिन लोगों ने 4 डाला था, you want to fight for it? Okay, more people going for 3. Okay. Oh, poor one, treating diabetes. Nobody wants that. Nobody wants that part. Treating diabetes, nobody wants. Okay. And the winner is GM's role in healthcare. Let's see if that is the answer that I was looking for. Oh, and more people adding to that. Wonderful. Wonderful. Really appreciate your response, huh? Thank you so much. That kind of motivates me to bring in more interactive stuff like this for you in the next session. I'll make sure that happens.
presentation. Time for the reveal, and yes, you guys are right. ठीक है, वो हम लोग यूजुअली जब एमसीक्यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो एक बहुत सी टेक्निक्स होती है, उसमें से एक टेक्निक ये सिखाई जाती है, द एलिमिनेशन मेथड, राइट? तो व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड? से दैट जो भी आंसर है उसे एलिमिनेट किया जा सकता है क्या, वो जरा चेक करो. सो लेट्स ट्राई दैट. ठीक है, सो ट्रीटिंग डायबिटीज. If I were talking about only treating diabetes, now we would have a problem, right? Why? Because सिर्फ डायबिटीज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना, तो हेडिंग में फिर डायबिटीज कैसे दे दें, बराबर. देन नीचे सेकंड ऑप्शन इज GM and cancer. That would mean we are talking about GM microbes being used only for treating cancer. Is that the case? They're talking about arthritis, leukemia, and diabetes also, right? So there is more to it. That's why वो दोनों अगर eliminate होते हैं तो बचा तीसरा, GM's role in healthcare. Now healthcare is all encompassing. हर चीज जो मेंशन की गई है सारा का सारा इसमें आता है. So GM's role in healthcare, that definitely is the best heading. Okay, good job guys. All right. So it's very important strategy जो हमने अभी की, skimming. Okay, what is the text about? How is the text organized? Right? अब इसमें ज्यादातर हम करते क्या है ना कि टेक्स्ट के बारे में उसका हेडिंग देने के लिए वगैरह के लिए, राइट, ओवरऑल आइडिया एंड स्ट्रक्चर समझने के लिए. तो ये रीडिंग थोड़ी फास्ट ही होती है, बिकॉज हम स्पेसिफिक्स कम, ओवरऑल क्या चीज एक पर्टिकुलर मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, उससे क्या क्या चीजें ट्रीट की जा सकती है वो बताया जा रहा है, बस बात तो उतनी ही थी, राइट. स्किमिंग टेल्स यू दैट वो टेक्स्ट बेसिकली किस चीज के बारे में है और स्ट्रक्चर क्या है, रीजंस बताएगा, बेनिफिट्स बताएगा, कंक्लूड कर देगा. ओवरऑल आउटलाइन स्ट्रक्चर स्किमिंग से वो पता चलता है. हम ज्यादातर स्किमिंग करते वक्त क्या करते हैं, हमारी रीडिंग की स्पीड अच्छी खासी रखते हैं, फास्ट रखते हैं. हर पैराग्राफ का एक अच्छे रिटर्न टेक्स्ट की सबसे खासियत ये होती है, आपको पहले 2 लाइन में ना वो पैराग्राफ का मेन आइडिया आ ही जाता है. हम स्पीच जब देते हैं तब हम लोग कभी कभी एग्जाम्पल पहले देते हैं और बाद में मेन पॉइंट पे आते हैं, ऐसे हम लोग थोड़ा सा हरकतें वहां पे स्पीच में थोड़ा अलग जाता है. बट रीडिंग के टाइम पे, सिंस यू नो दिस कंटेंट कुड बी रेड बाय समबडी व्हेन यू आर नॉट अराउंड, यू मेक इट अ पॉइंट कि ज्यादातर आपके पहले 2 सेंटेंसेस में मेन आइडिया कन्वे कर दिया जाए ताकि आगे उनको वो गाइडेंस रहे. लाइक आई गिव यू द फ्लो ऑफ डिस्कशन इन द बिगिनिंग ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन, सेम अप्लाइज, राइट. तो पहली लाइनें जो है पैराग्राफ की, पूरा पैराग्राफ नहीं, पहली लाइनें अगर पढ़ ली जाए, मेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स है जो रिपीट हो रहे हैं तो हमारी नजर में वो एकदम से आते ही हैं बिकॉज सेम स्पेलिंग्स बार बार आ रहे हैं ना, कीवर्ड्स, राइट. सो द रेपिटेटेड वर्ड्स, द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन अ वेरी क्रूशियल मैनर, हमारी आंखें उन पे डेफिनेट जाती ही है. लाइक समबडी यूजिंग द वर्ड लाइक एक्चुअली बार बार किसी के स्पीच में आया तो हमारा ध्यान जाता है. रीडिंग का भी वैसा है. तो मेन वर्ड्स पे और हर पैराग्राफ की पहली लाइंस पे अगर आपका ध्यान जाए, आप पैसेज को स्किम कर सकते हैं, right? So you get the idea, overall idea of what is it about. The structure of the passage is understood. Scanning. Now this is where the specifics come in. So जब हम लोग वो eliminate कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि मुझे heading दे दीजिए तो आपने दे दिया. But when I came to explaining why a particular answer is right or wrong, now there we were discussing a particular हिस्सा of that passage more, right? कौन से डिसीजेस के बारे में बात किया, वो सब हमने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया उस बात को, बराबर. स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक्स पे ज्यादा जाते हैं. नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस. अगर मैंने एक पैसेज को पहले स्किम कर लिया है, मुझे उसका स्ट्रक्चर पता चल गया है, बकायदा मुझे आइडिया आ ही जाता है कि जो हिस्सा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, वेयर वुड दैट बी. लाइक टुडेज प्रेजेंटेशन, इफ समबडी आस्क्ड यू व्हेन डिड दीपा मैम डिस्कस स्ट्रैटेजीज, अरे वो लास्ट आया था, वो स्किमिंग वगैरह ना, वो व्हाट वेंट रॉन्ग के बाद आया था. स्ट्रक्चर पता रहता है तो हमें चीजें ढूंढने में आसानी रहती है, राइट. द बिगर पिक्चर. टू गिव यू अ मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल, इफ आई वर टू आस्क यू टू सॉल्व अ पजल, मैं आपको एक पजल का पीसेस देती और बोलती चलो इनको, जो जिक्सॉ पजल रहता है ना, डिफरेंट पीसेस साथ में रखे जाते हैं, अगर मैं आपको वो देती, डायरेक्टली देना और बोलना चलो जोड़ो, जोड़ने पे जो बना वो आंसर वैसा, या फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, फिर मैं आपको कहूं कि अभी आपको ये पिक्चर इन पीसेस से बनवाना है,
that outline that you have in mind that helps you better in putting the pieces together, same logic apply करो. अगर आप एक टेक्स्ट को, हमें कई बार लगता है मैम पहले स्किमिंग फिर स्कैनिंग, डबल हेडेक नो ना, पहले पजल देख लिया अब बिठा रहे हैं, ज्यादा आइडिया आएगा. सेम है, पहले स्ट्रक्चर समझ लो, अब स्कैनिंग के लिए जाओ, ज्यादा ख्याल आएगा कि कहां से क्या आएगा. बराबर है. तो स्कैनिंग इज फॉर द स्पेसिफिक्स, वेयर इज द कंटेंट, वो हमें स्किमिंग आइडिया देता है. That's why it's easy for us to hunt down a particular answer. Comprehension becomes easier. Any section where I feel this content could be there, my answer could be there, finding it becomes easier अगर आपने skimming किया है. So as you can see, reading की strategies अपने आप में एक अलग अलग नहीं है. Purpose हमारा different हो सकता है, but strategies को जब use करते हैं, अगर आप साथ में use करें, तो it helps you get more out of the same content, right? Skim करके स्कैन पे जाना makes more sense, right? So reading carefully helps you comprehend and understand. No doubts about that. Slow pace reading, it's friendly to understanding. Okay? Idea skimming के लिए फटाफट पढ़ के स्ट्रक्चर मिल जाएगा. अब स्ट्रक्चर के अंदर कंटेंट के स्पेसिफिक्स के लिए अब हमारा रीडिंग स्पीड थोड़ा कम होगा. If you are at 400, now we come down to 200 words per minute. Right? Not mere identification of outline or specific words. Scanning में उसके लिए नहीं है. It is for more of the content. समझने के लिए है. Okay? Overall, okay? Overall सारे connections मिलकर क्या हमें दे रहे हैं content में से. Scanning हमको वो बताता है. Right? Now coming to the part where we're talking about the retention aspect of it. ये SQ3R मेथड, ये काफी यूज्ड मेथड है, जाने अनजाने हम यूज करते भी हैं, राइट? सर्वे इज बेसिकली व्हाट, स्किमिंग जो हमने किया ना, ये वैसा ही है. आपको कोई कंटेंट जब दिया जाता है, लेट्स से आई गेव यू माय नोट्स, ओके, नोट्स अबाउट व्हाट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है. अब इसमें परसीव्ड, ट्रांसमिटेड, किनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, बहुत सारी चीजें आ रही है. ओके, क्या है, राइट? अब एक एक करके पढ़ने बैठे सारा नया कंटेंट डिफिकल्ट हो जाए. पहले क्या करेंगे? सर्वे. ओके, व्हाट डू आई डू? मैम ने जो नोट्स भेजे उसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ है. ओके, लाइक इसके अंदर ये आ रहा है. माइंड में एक फ्लो चार्ट सा बन जाता है जब आप सर्वे करते हैं. तो आप टाइटल्स पढ़ते हैं, हेडिंग्स पढ़ते हैं, पहली लाइनें पढ़ते हैं, दैट्स इट. वी डोंट गो इनटू द इन डेप्थ ऑफ इट, राइट? इसके बाद एक हरकत करते हैं हम लोग जो बहुत जरूरी है, क्वेश्चनिंग. ओके, आई फाइंड इट वेरी यूजफुल व्हेन आई डू दैट, एंड साइकोलॉजिकली इट हैज बीन प्रूवन. हमारा माइंड आंसर्स बहुत ढूंढता है, तो अगर आप एक सवाल का जवाब उसको दो, उसे ज्यादा याद रहता है. So if you're reading a text which says factors that affected global warming, ये टाइटल था, हम क्या करेंगे? सर्वे तो हमने कर लिया, तो हमें पता है कि टाइटल है फैक्टर्स, राइट? अब सेकंड पढ़ाओ क्या? When I start reading this, what do? I convert each of my title into a question. Okay, it's like a personal inquiry. What factors contribute to global warming? That is how I'm going to read this now. So when I'm reading the content, it's not just information because I'm reading, it's information because I had a question, it is being answered. Right? हमारे बचपन की आदत है, curiosity है, तो हमारा learning better है. Right? Convert the titles and subtitles into questions. When you're reading, you're getting an answer. This way, the content remains here better. Right? You understand it better. Right? Now, as you read, this helps you identify critical information. Already आप question के answers मिल रहे हैं. So now you keep on reading, and this is what it is happening. It's furnishing details for you. Initial impressions हल्के फुल्के आएंगे. बाद में it will become stronger. Okay? After reading, repeating. Okay? Recite. Read aloud. We said reading के time पे नहीं रे बाबा. After reading, what do? Close that book. Keep it aside. मुझे फॉर्मेट तो पता है, मैंने उसका सर्वे में स्किमिंग किया था, मैंने सोच लिया था व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. अभी मैंने रीड किया, मुझे थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिल गए हैं. व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? ओके, व्हीकल यूसेज, ये डिफॉरेस्टेशन, एक एक करके लॉट ऑफ यूज ऑफ एसीज एंड दिस काइंड ऑफ गैजेट्स, राइट? ऐसे करके अभी आई रिकलेक्ट व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट इन माय ओन वर्ड्स. ओके,
लेकर आओ, लेट्स सी, मियरली ऐसा रीड करके छोड़ नहीं देने का, लेट्स रिसाइट, लेट्स सी व्हाट वी गैदर्ड, ओके, वाज यू श्योर व्हाट यू हैव गैदर्ड, ओके। अब इसमें एक चीज है, रिव्यू, ओके, एक बार बोल के देख लिया, उसके बाद लेट्स रिव्यू दिस, नो, लेट्स रिव्यू एंड सी मुझे कितना याद था, ठीक है। इसका फंडा क्या है, अब ये समझो, हम लोग पढ़ के एग्जाम लिखने गए, ओके, विद मी एवरीवन, विद मी, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस। हम लोग पढ़ के एग्जाम लिखने गए, व्हाइल आई वाज इन द एग्जाम, मुझे वो फिल इन द ब्लैंक्स का वो मुझे, अरे यार मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है, अरे ये तो पढ़ा था, ये पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा है, कितना याद किया पर याद नहीं आया, ठीक है। अब मैं बाहर आई और फ्रेंड ऑफ माइंड सेज, तूने वो लिखा, अरे वो मैंने पढ़ा था पर याद नहीं आया, अब उसने मुझे आंसर दिया, वो आंसर ना जिंदगी भर नहीं भूलेगा, पढ़ा था एग्जाम के वक्त याद नहीं आया क्या था, अब वो आंसर भूलेगा ही नहीं, राइट। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है, आपने रीड कर लिया, कंटेंट गैदर कर लिया, एक बार रिसाइट करके देख लिया, अब व्हेन यू गो बैक टू नोट्स you see exactly what you have missed, exactly what is it that you are not able to remember, okay। review makes sure वो content भी आपकी memory में add हो जाए। तो जब आप SQ3R सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू ये मेथड यूज करते हैं रीडिंग के दौरान, कंटेंट का रिटेंशन बेटर है, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर है, ओके। इट्स अ वेरी गुड मेथड टू यूज, स्पेशली बिकॉज योर स्टूडेंट्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। So let's sum it all up, काम की बात पे आते हैं, आपको पूरा सम अप करके बताते हैं। रीडिंग के लिए शुरुआत करते वक्त, okay, when you start with reading, start with a clarity of purpose. Why do I want to read this? It is for pleasure sake, मुझे मजे के लिए पढ़ना है तो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो किस तरह से। So as we said, as per purpose स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए। Hold the text at a comfortable distance. Right? Object अगर यूज कर रहे हैं, move it fast. We don't keep the word to word object. We move it fast. We make sure that हमारा रीडिंग का स्पीड कम ना हो। Create questions as you read. मेरा माइंड ऐसी चीजों को ज्यादा याद रहेगा जहां पे उसको लगेगा कि सवाल का जवाब मिला है, राइट। तो अगर मेन हेडिंग है और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स है, हेडिंग को क्वेश्चन में कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट्स आपको एज आंसर याद रहेंगे। आंसर एंड रिकॉल, कॉम्प्रिहेंड इन रियल टर्म्स, ओके। कॉम्प्रिहेंशन as I was saying, if you've understood, automatically you'll remember it better, right? Exact same words नहीं याद होगा, but you'll remember the content, okay? Main point जरूर याद रहेंगे। For better understanding, हाँ मैम ये तो अभी छोटा कंटेंट होगा तो होगा, ज्यादा बड़ा कंटेंट होगा तो वहां पे नोट टेकिंग इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी कल करवाऊंगी, ठीक है। आज आपको ज्यादा इसके साथ बम्बार्ड नहीं कर सकती, बट कल हम लोग लिसनिंग और नोट टेकिंग की बात करेंगे, तब हम लोग ये पॉइंट कवर करेंगे कि ज्यादा कंटेंट हो तो नोट टेकिंग कैसे मदद करता है, ठीक है। पोस्ट रीडिंग, रीडिंग हो गई, उसके बाद क्या, रिकॉल पॉइंट्स दैट इंटरेस्टेड यू द मोस्ट। ज्यादातर आप वो स्पीच में भी कुछ एक दो वर्ड्स आप अच्छे डालो तो लोगों को ज्यादा ध्यान रहता है, वैसे रीडिंग में आपके काम के जो पॉइंट्स थे, ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगे वैसे पॉइंट्स, उसके इर्द गिर्द के पॉइंट्स आपको याद रह ही जाते हैं। तो फाइंड थिंग्स दैट वर इंटरेस्टिंग फॉर यू और दैट वर न्यू टू यू, राइट। उनके इर्द गिर्द के पॉइंट्स आपको उसकी वजह से याद रहेंगे, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इतनी चीजें रीडिंग को लेकर, क्योंकि आप लोग जिस एरा में हैं, एज प्रोफेशनल्स व्हेन यू मूव आउट, the competition is also pretty high,
So it's very important that we don't stop at just reading what is given. I'm not saying आज से ही सारा research आप शुरू कर दीजिए, but it's always good कि एक content अगर आप पढ़ते हैं एक जगह से, कहीं और sources में से उसके बारे में और आप पढ़ें. What is happening? पढ़ी हुई बात reinforce हो रही है नए नजरियों के साथ. So the chances of this content becoming usable, आप कहीं इसके बारे में बोल पाए या कहीं इसको ठीक से यूज कर पाए, उसके चांसेस बढ़ते हैं. As I said, शुरुआत में ही बात सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं, बात नजरिए और समझ की भी है. It helps you broaden your perspective. You learn to reason better. किसी के साथ डिस्कशंस करते वक्त आप बात जैसे रखते हैं, वो बात करने के लहजे से ही पता चलता है. You are very well read we say. Yeah, reading helps you there. So अगर so sorry this is happening. Okay, so yeah, so don't stick to just one text. For exam's sake you want to do that, fine, but if you're interested in something, do make sure you go to different sources and read more. Better learning happens when you don't stick to one book. There is cross-referencing. Okay, really helps. Okay, and takes you a long way ahead. So with that, happy reading. That's all I had to offer with regard to reading for today. All right. So I think I can stop sharing the screen and you can give me any of your doubts or questions that you might have. These are the resources that I'll be sharing with you, so you can look further for various activities on reading. These questions are welcome. Okay. There are no questions in the chat box, nor are there any hand raises. Sorry, sir, I could not hear what you said about. Sorry about this. There are no questions in the chat box. Okay. There are no questions. There are no hand raises either. Okay. So I hope the session was enjoyed by them, and the session will again be available on the LMS by tomorrow afternoon or so. It will also come with some questions that Madam will be providing us. The session was wonderful, and I really enjoyed the session very much. I have taken out some notes, and I think so I can now be a better reader. The speaker was extremely confident. That makes things very, very easy for the learner. That is what I felt so. And the concept of using Menti.com was a wonderful idea. I had never used it. So thank you so much for this wonderful session, and we'll be with you again tomorrow for the next session. Thank you very much. So they can send us questions even after the sessions, right? Yes, they can send us the question. The questions will reach you in that case. Okay. We can communicate to you with the questions for sure. Thank you for the feedback, sir. Thank you so much. Yes, thank you so much. Yes. White coat चा तिथे कोण आहे? Yes, sir. Pratik, you can close this. तिकडे काही क्वेश्चन्स वगैरे नाही ना आलेले, एकदा बघून घे बरं. नाही, चॅट बॉक्सला एम्प्टी आहे, चॅट बॉक्स आणि हँड रेजेसही नाहीये. हँड रेजेस नाहीये. ठीक आहे, काही हरकत नाही. चालेल. थँक यू सो मच. Yes, thank you sir, thank you ma'am. Thank you, Pratik sir. Thank you, sir. Okay.